Hello, excuse me. Please unmute. Good evening, ma'am. Good evening, Vika. Good evening, ma'am. One of you please give me your textbook. Do you have your textbook? Please read it. Thank you. एनकेटी सर आलेत का विचार रे? Supreme Court chapter is done with in your class. Supreme Court. Yes. Yes, that's done. So we are going to proceed with High Court and Subordinate. Prime Minister. Remaining Supreme Court remaining and High Court chapter. High Court is also not yet done. History of the Muslim League. उसके नीचे वो again, see when we were in the middle of the Middle of quit India. Are you not sure with Supreme Court being done or not done? Yes, ma'am. Done half of salaries. It's done, beta. Supreme Court chapter is done, I think. Online students, will you please let me know which chapter you have studied up to? Ma'am, can you repeat? You're not audible. Chapter you have studied up till, please let me know, online students. Have you completed with Supreme Court, beta? Akanksha, Aditya? Okay, class. Please pay attention. Today we are starting with High Court. Let me get the confirmation about Supreme Court, then we will go to that chapter. Supreme Court, page 202, fifth point. Page 202, fifth point. Yes. From there, it's remaining. Yes. That is the appellate jurisdiction you wish to say? No, freedom to announce decisions. From there, it's remaining. Yes. That means the whole of chapter itself is remaining. You want me to take that first? Yes. Supreme Court shall I take first? Yes. Okay. So as you say, we'll start with Supreme Court. We'll continue from where it has been left incomplete. Okay, Bacho? Is that okay? Yes. So fifth point, is that discussed or should we discuss from fifth point? Fifth point. Fifth point. Freedom to announce decision and decrees. What do you understand by the word decree? What do you understand by the word decree? That means a command or an order. Okay. So Supreme Court will always have a freedom to give or announce justice. Suppose it doesn't happen, what will happen? Be able to give commands and Justice in good way. Yes or no? If some minister or if a political party continuously influences the decision of the Supreme Court, naturally it will not be able to discharge its justice or duties in good way. they will do it for their own benefit. Yeah, they might do it for their own benefit. So Supreme Court has always been given that freedom, that independence, that it shall discharge its justice and judgments wherein nobody has any outside influence over it. Okay. So the next point, it deals with the punishment for contempt of court. Do you understand the meaning contempt of court? What do you mean by contempt? Yeah, if you do a misbehavior or if you try to say some bad words about a judge or the Supreme Court or its proceedings, then you may be penalized under contempt of court. Yes or no, beta? What is that? Contempt of court.
Suppose tomorrow morning you get up and on the headlines you find a cartoon of the CJI of India, or if you feel there is some derogatory criticism written about the CJI, then that person who publishes such stuff or writes such things about the CJI or the Supreme Court or any other justice or judges of High Court or Supreme Court, he will be penalized under contempt of court. Okay, why is this rule made? Like, why can't we make jokes on them? I mean, many of you must have seen so many cartoon movies or cartoon clips on PM Modi and yes. Yeah, you see so many things. Then why not about the judiciary? Why these things are refrained when it comes to judiciary? क्यों ये सारी चीजें नहीं करते judiciary के मामले? Highest power, yes, it has highest power, and more than that, beta, the one who is giving you justice, the one who gives the judgment, if you start making fun of them, then there are chances that their judgment will get affected. उन्हें डर लगेगा कि मैं ये जजमेंट दूंगा तो कल को मेरा कार्टून छप के आ जाएगा पेपर में. यस और नो? कल को मैंने अगर ये जस्टिस दिया, अगर ये भले ये जजमेंट बहुत सही है, बहुत सटीक है, करेक्ट है, मेरे सारे एविडेंसेस के हिसाब से है, पर अगर मैं इस तरह का जजमेंट दूंगा तो कल मेरे ऊपर फिल्म बन जाएगी, कल मेरे ऊपर कोई जोक बना देगा. यस और नो? ये फियर से उन्हें मुक्त करने के लिए किन्हें? सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को और चीफ जस्टिस को और अदर जजेस को इस डर से, that fear of defamation, to remove that fear from their mind, they have been given the benefit of contempt of court, wherein if anyone tries to say any derogatory sentence or statement about the Supreme Court or its judges, they will be penalized. Any doubt in this part? Yes. Coming to the next point, full control over its procedure of work and establishment. Have you ever seen that any day a minister will phone up the Supreme Court CJ and tell, आज तो मेरा ही केस लगा और लड़ेंगे? मानेगा सुप्रीम कोर्ट उसकी बात? बिल्कुल नहीं मानेगा. If some minister makes a phone call to Supreme Court CJI and says that कल को मेरा ही केस होगा, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? Because Supreme Court has full authority. It's an independent organ. It will decide for its own whose case has to be heard, whose case has to be scheduled, when and at what time. Followed? Then next part, no discussion in the legislature on the conduct of judges. See, many a times you might have noticed this thing, wherein the ministers who are the part of our executive body, they are, entangled in some case which is running from a very quite long time, and it has reached up to the level of Supreme Court. In such case scenario, the ministers and the judges, they both are well aware of each other. So you can't have a discussion about the judges and their functioning while you are having a session in your parliament. Okay, मान लीजिए आप एक मिनिस्टर हैं, आप पार्लियामेंट में गए हैं, पार्लियामेंट का किसी सेशन चल रहा है, बजट सेशन है, मानसून सेशन है, कोई भी सेशन चल रहा है, आप आ गए हैं, तो आप किसी भी जज के बारे में कुछ भी बुरी बातें नहीं बोलोगे, कोई डिस्कशन नहीं करोगे, अपने केस के मामले में कोई भी डिस्कशन आप नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? Because if you start doing such discussion in the parliament, then parliament will not be able to function according to its own process. एक तो पार्लियामेंट के काम नहीं होंगे, आप अपने डिस्कशन करते रह जाओगे. यस और नो? देन सेकंड थिंग, जजेस जो वहां सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं या दूसरे कोर्ट्स में बैठे हैं, वो लगातार इस बिलीफ में रहेंगे कि पता नहीं मेरे बारे में बाहर कौन क्या बोल रहा है. यस और नो? So at least when you are in the premises of the parliament or a legislative body, you are not allowed to make any discussion. वो अलग बात है कि आप अपने घरों में बैठ के फोन पे क्या बात करते हो, वो कोई सुनने नहीं आ रहा है. Yes or no? So naturally you can talk anything there, but in the premises of parliament or in an official government or body office, you are not allowed to have any such discussions. Follow? Yes. The next point, prohibition of practice after retirement. Why do you think there is a prohibition of practice after retirement? If a Supreme Court judge is retired, he is retired at which age? Tell me. 65. 60. And a High Court judge retires at 62. 62. Please remember this. 65 पे कौन retire होगा? Supreme Court judge. And at the age of 62 is going to retire High Court judge. Practice नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? There are many people who work even after retirement. Then why not Supreme Court judges?
पर अगर कोई प्रेशर ना आपको कि फैमिली को कुछ करें करे या वो भी हो सकता है that yes that's the family को तो harm हो सकता है but then there is another very big reason for this. Suppose a person is maybe because they have that level of they know how to deal with it's very like and they might misuse and they might misuse their knowledge. They are excellently brilliant when it comes to legal matters. Yes or no? That is why they are given this high post. And when a person is sitting on such a high post, he is naturally having lot of information about many cases that are going on in various other courts. Yes or no? समझ रहे हो बच्चों? तो अगर अलग-अलग केसेस के बारे में बहुत सारी जानकारी है और ऐसे इंसान को अगर प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ दे इवन आफ्टर रिटायरमेंट तो वो इन केसेस को क्या कर सकता है नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है या अपने बेनिफिट के लिए पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है एनी सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस कैन बी डन और इन्हें इन्फ्लुएंस से क्या हो जाएगा देन जस्टिस विल नॉट बी गिवन इन गुड फेथ सो नेचुरली दिस राइट इज नॉट गिवन सो आफ्टर देयर रिटायरमेंट दे आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस तो फिर खाएंगे क्या भूखे मरेंगे क्या ये पेंशन वेरी गुड. So they are given a very good high amount of money as their pension. Besides this, they can also influence their colleague. आप किसी जगह पे 15-20 साल से काम कर रहे हो आपको वहां का हर एक आदमी के बारे में सब कुछ पता होगा मे बी इवन अप टू द पर्सनल लेवल घर आना जाना भी होता होगा दिवाली में मिलते होंगे खाना वाना खाते होंगे या सब तो अगर आप रिटायर होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट जज को सुप्रीम कोर्ट में जाने दे रहे हो प्रैक्टिस करने दे रहे हो तो मे बी वो अपने कलीग्स को क्या कर देगा इन्फ्लुएंस कर देगा कि भाई तुम इस केस में ना ऐसा ही जजमेंट दो इससे हम दोनों का फायदा होगा हम दोनों को पैसे मिलेंगे these things might happen so in order to avoid all these things once a judge is retired from Supreme Court and High Court they are not allowed from High Court there is a different thing again a different story comes but once a judge is retired from Supreme Court he is not allowed to practice बिल्कुल भी allowed नहीं किया जाता then next comes jurisdiction and powers of the Supreme Court what do you understand by jurisdiction it is a power of law-making body to give out places. अच्छा एक बात बताइए आप सब अपने घरों में एक एक पेंटिंग ले गए ओके एक एग्जीबिशन पे गए थे आर्ट गैलरी में और सबने एक एक पेंटिंग खरीद लिया और सब अपने अपने घरों में गए उस पेंटिंग को कहाँ लगाना है इस बात का डिसीजन कौन लेगा आप खुद लोगे आपका घर है भाई आप खुद लोगे या फिर आपके पेरेंट्स के लिए इसका डिसीजन नहीं सुनते हैं शायद इसके घर से एनीवेज कम बैक सो बेसिकली तो यू हु विल डिसाइड उस पेंटिंग को कहाँ लगाना है आपका पड़ोसी आके डिसाइड करेगा कि आपके घर में आपको पेंटिंग किस दीवार पे लगा रहे हो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा लेना बालकनी में पर वो डिसीजन किसका है आपका आपके नेबर का नहीं है because your house is under your authority so it is you who are having the jurisdiction of your house yes or no कि किस एरिया पर आप क्या कंट्रोल कर रहे हो और कितना कंट्रोल कर रहे हो उस केसेस पर आपका क्या अधिकार है किस तरह से आप उस केसेस के आउटलुक को देख रहे हो ये सारी चीजें jurisdiction में अंडर आता है इट इज बेसिकली द कमांड और द एरिया अंडर व्हिच यू कैन एक्सरसाइज योर कमांड ओके किन किन चीजों पर आप कमांड कर सकते हो आप पता चला वो पेंटिंग आपने लगा दिया दादाजी के रूम में दादाजी को अच्छा नहीं लगा तो वो क्या करेंगे निकाल के लेके जा ऐसे ही बोलेंगे ना फिर यस और नो अगर वो पेंटिंग आपने किचन में लगा दिया तो मम्मी मानेगी कुक मानेगी बिकॉज शी इज द वन हु इज कुकिंग देयर यस और अगर उससे प्रॉब्लम होता है उसकी किचन हटाने के लिए कहेंगे आपको सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू stop what you are doing pay attention so this is what is jurisdiction it is the power to hear and determine a dispute or a case which has come up to you whether आपके पास वो power है भी या नहीं है इस बात का डिसीजन एक jurisdiction से डिसाइड होता है कि कौन से केसेस आप सुन सकते हो डिसाइड कर सकते हो हियर कर सकते हो और रिजॉल्व कर सकते हो किन किन केसेस पर आप जजमेंट दे सकते हो इसे हम jurisdiction में पढ़ते yes or no now Supreme Court has 4 types of jurisdiction first is original jurisdiction second is appellate jurisdiction third is advisory jurisdiction fourth is revisory jurisdiction let's take first one original jurisdiction what do you understand by original jurisdiction
It's about the Supreme Court. हाँ, जिस पर से सुप्रीम कोर्ट उन केसेस को heard करे। First time by the Supreme Court. Correct. Both of you are correct. अब मान लो आपका गॉड फॉरबिड आपके किसी फ्रेंड के साथ में झगड़ा हो जाता है, पर आप क्या करेंगे? सीधे उस झगड़े को लेके सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे? बेटा कोई सुनेगा आपके झगड़े को? क्या कहेगा? जाओ यहाँ से, ऐसे कहेंगे। तो पहले आप कहाँ जाते हो झगड़े को रिजॉल्व करने? कोर्ट ही जा रहे हो सीधे सब। कोर्ट पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं बेटा, वहाँ पे FRI होती है, कंप्लेन निकल पड़े सबके सबको। Come back to the class now. Listen. So when you get into a fight or a petty issue or a dispute, what you will do? You will first approach the police station. Police will file an FIR or a complaint or whatever it is. And then if it is not resolved amicably and आपस में ये झगड़ा नहीं सुलझता है या आप arbitration से यानी out of court नहीं सुलझा पाते हो, तो फिर एक कोर्ट जाता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट जाता है, फिर हाई कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो। But some cases is not necessary in all the cases. अगर मान लीजिए आपका dispute है आपके भाई के साथ for the property and it is because of some will or some issue or what, you know, some old ancestral property, you may not have to approach police for that. Because if a complaint नहीं बनती, you can directly go to the court regarding it. And if it is about will, you will go directly to the high court also. उसमें district court भी नहीं आता। Okay, will के cases होते हैं तो directly कहाँ जाएंगे? High court चले जाएंगे। will है तो, अगर will नहीं है तो फिर district court से case आगे बढ़ेगा। समझे बेटा? Any doubt? तो अगर कोई petty fights होते हैं ना जहाँ पे हमारा मरिया हाथापाई पे आ जाता है, तो इस चीजों में पुलिस को इंटरवीन करना पड़ता है to maintain the law and order in the scenario. Okay? Coming back, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बेटा वो होता है जहाँ पे आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। अब सीधे सीधे हम और आप तो जा नहीं सकते बेटा, हमें कोई एंटरटेन करेगा भी नहीं, तो कौन से केसेस में एंटरटेन करेंगे? So those cases where the dispute is between the state government and the central government. State government का झगड़ा हो गया, मान लो कोई dispute हो गया with the central government, then they both can go to the Supreme Court and that will have an original jurisdiction. सीधे सीधे कोर्ट के पास जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। क्यों? हमें तो स्टेट को हाई कोर्ट के पास जाना है, हम क्यों डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे? पूरे इंडिया का, यस, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया का सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है, पर हम अब समान लो, if there is a dispute between MP, that is Madhya Pradesh, and the central government, then why can't the Madhya Pradesh High Court itself resolve that case? Why do it has to go to Supreme Court? Yes, beta, biased होगा, very good, because state government का जो भी dispute है, अगर वो उसी state के high court में resolve करने के लिए जाएंगे, तो वो तो अपने ही हिसाब से judgment देंगे. Why will they listen to the central government? In such a scenario, the case is taken to the Supreme Court ताकि unbiased judgment हो सके. अब मान लीजिए दो states का आपस में झगड़ा हो रहा हो, तब भी वो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, आपस में हाई कोर्ट में सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ऐसा सिचुएशन होता है बेटा, तो इंटरनेशनल कोर्ट्स भी एस्टैब्लिश है जहाँ पे दो कंट्रीज आपस में अपने जो भी इश्यूज है वो सॉल्व कर देंगे। ओके, देयर आर इंटरनेशनल कोर्ट्स, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं, दे विल सॉल्व देयर केसेस, सो डोंट वरी। लेट्स कम बैक टू इंडिया, और पहले इंडिया की बातें तो समझ ले। तो यहाँ क्या होगा? हाँ पूछो। जैसे मैम दो ऐसे कभी-कभी कुछ हाई कोर्ट्स मर्ज होते हैं, जैसे मुंबई और गोवा का, तो फिर दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली के वहाँ पे जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। Yes, in such scenario also it will go to Supreme Court. But who are the two persons who are dispute that you tell me? किसके बीच? मुंबई और गोवा। मुंबई और गोवा के बीच आपस में डिस्प्यूट तो बेटा नहीं हो सकता है, बिकॉज दे आर मर्ज एंड एक ही हाई कोर्ट के अंदर वो आ गया। ओके, तो एक ही हाई कोर्ट के पास दोनों के बेंचेस हैं। फिर तो ऐसा कहा जाए कि औरंगाबाद और गोवा बेंचेस में भी डिस्प्यूट हो सकता है, फिर औरंगाबाद नागपुर बेंचेस में भी डिस्प्यूट हो सकता है। सो दैट
ऐसा situation नहीं आता because altogether these cases are under the one flagship of Bombay High Court. But मान लीजिए अगर ऐसा कभी हो भी जाए तो एक स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए सरकार के पास अटॉर्नी जनरल नाम के वकील होते हैं. यस, तो अटॉर्नी जनरल उस स्टेट के बातों को रिप्रेजेंट करने के सुप्रीम कोर्ट में. ओके, सो इन वेरी रेयर सिचुएशन अगर आपस में स्टेट का कुछ बन नहीं रहा है, स्टेट का अपना एक वकील चाहिए है, तो अटॉर्नी जनरल को भेजा जा सकता है. ओके, then coming back, so there are very many states which might get into a dispute amongst themselves and they can file the case in the Supreme Court. Governments, two state governments, if they are having a dispute, they can go to the Supreme Court. If one state and many other class, if I hear any murmur, I'm going to punish you all. If one state is having any dispute between one or more than one state, then also it can go to Supreme Court. Yes. When, for example, Maharashtra and Telangana के बीच में एक dispute चल रहा है, तो ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में क्यों नहीं जा सकता? दिल्ली हाई कोर्ट भी था, दिल्ली का अपना है ना बेटा. It's the only union territory which is having a high court of its own. Otherwise, there are no other union territories which have. And दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकता. नहीं बेटा, it will not go. They straight away go to Supreme Court. If Supreme Court feels yes, some other high court can intervene and solve this matter, it can give that case. But that happens very rare. दूसरे कोर्ट वाले जिनके रिलेशन इतना अच्छा नहीं है. उनको ही प्रेफर करेंगे. Very good. That will also get influenced by the political party. अगर मान लीजिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आज रूल है, कल को कोई और रूलिंग पार्टी आ जाएगा, तो वो अपने हिसाब से जस्टिस देंगे. They will give benefit to that state where their ruling party is. So these issues को resolve करने के लिए this state will take it to the Supreme Court. अब कौन से झगड़े हम Supreme Court नहीं ले जा सकते, वो भी देख लेते हैं. बोलो क्या हुआ? One state having dispute with two states, then the case will be Supreme Court बेटा, Supreme. One state with more than one state, one state with another state. In all scenarios, they are going to land up in Supreme Court. Now, which cases you can't take to Supreme Court directly under original jurisdiction? First, when there is some treaty or an agreement that has already been given a law sanction, you cannot take such cases directly to the Supreme Court. मान लीजिए मध्य प्रदेश की सरकार ने महाराष्ट्र की सरकार के साथ आपस में एक अग्रीमेंट बनाया, आपस में एक ट्रीटी बनाई. अब इस ट्रीटी के साथ वो कुछ काम कर रहे थे, मान लो एक ब्रिज बना रहे हैं या मान लो डैम बना रहे हैं, इसके बीच में उनके बीच हो जाता है some dispute. This dispute they cannot directly take it to the Supreme Court. They will have to first resolve it in their high courts. Okay? In this scenario, they will have to resolve it in high court. अगर high court में justice नहीं मिला, किसी भी अगर state को ऐसा लगता है कि मेरे साथ justice नहीं हुआ, only then it can go to the Supreme Court. अब ऐसा क्यों होता है? Why is it like that? This agreement और treaty की वजह से ये directly Supreme Court नहीं जा पाता. Because a treaty and an agreement naturally will have all the points and clauses mentioned in it. And when things are already mentioned, that too in a written format, it also gives citation कि किस आर्टिकल के तहत ये लिखा गया है, किस प्रोविजन के तहत ये सारी चीजें लिखी गई है. सो इन सिचुएशंस में ना डिस्प्यूट होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम होती है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी नो. बोथ द स्टेट्स नो कि अगर हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा. तो इन मामलों में केसेस बनने या डिस्प्यूट होने की भी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है. बट अगर फिर भी हो गई तो दे विल फर्स्ट रिजॉल्व इट इन देयर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स एंड ओनली देन दे कैन गो टू द Supreme Court, and this is how the process is, and we cannot question about. Okay, follow. Next situation wherein you can't take the case directly to the Supreme Court. Suppose if there is a river dispute. How many of you know that there is a Kaveri river dispute? Yes. What is that river dispute all about? They block the rivers and because of that. And which three states are fighting for it? Karnataka, Tamil Nadu, And Andhra Pradesh, yes. These states are fighting amongst themselves and all three are saying, हमें ये पानी चाहिए, हम तुमको ये पानी नहीं देंगे. This is what the dispute is. So when there is an interstate river dispute, then also you can't take the case directly to the Supreme Court. But yes, you can take it to the Supreme Court only after you first go to the tribunal. Wait, watch my words. Where you have to go?
Tribunal. What do you understand by the word tribunal? ना बेटा ट्रिब्यूटरीज तो रिवर की होती है बेटा. ये क्या है? ये ट्रिब्यूनल है. क्या बेटा? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जैसा कुछ होता है. See, I'll tell you what is this tribunal. See, listen, class, come back. Listen, what a tribunal is. हाई कोर्ट के पास केस जाते हैं. कौन से टाइप के केस जाते हैं? सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, ये सब जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के पास भी कौन से केस जाएंगे? क्रिमिनल, वैसा. बट हर हाई कोर्ट में या हर सुप्रीम कोर्ट में सभी जो लॉयर्स बैठे रहते हैं ना, दे आर मोर क्वालिफाइड इन द लॉ फील्ड. यस और अब मान लो केस है, इंश्योरेंस कंपनी का केस है, तो उनके पास इंश्योरेंस के रिलेटेड नॉलेज होना जरूरी है ना, because they are law graduates. Yes or no? How far will they have knowledge about insurance, income tax, related? Yes or no? Very limited knowledge they have. So when you take a case to a tribunal, what you are actually doing is you are going to that subject expert. Suppose if your case is related to income tax, okay, you will approach the income tax tribunal. Income tax tribunal are those who will have complete subject knowledge about income tax related rules and laws. Okay, and in that case you will get a speedy justice. अगर आप यही केस बाद में आप ले जा सकते हैं, in case you are not satisfied with the judgment of the tribunal, but of course you can take it to the Supreme Court later on. But first instance में आप कहाँ जाओगे? आप tribunal में जाओगे. क्यों? क्योंकि tribunal में वैसे लोग बैठे रहेंगे जो इस knowledge के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में सारा knowledge अपने पास रखे हुए हैं, और वो आपको बेटर जस्टिस दे सकते हैं. ओके, दैट इज व्हाई यू डू दैट. अब ऐसे ट्रिब्यूनल केस के लिए होता है, रेलवे के लिए तो होते हैं, दूसरा होता है पेंशन के लिए. Usually there are some provisions between two states and the central governments also regarding the pension policy. तो इन पेंशन पॉलिसीज के भी जो भी केसेस बनते हैं ना, आप सीधे उन्हें उठाकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते. इसको भी रिजॉल्व कहाँ करना पड़ेगा? इनके ट्रिब्यूनल. फिर हो सकता है आपको जस्टिस अच्छा नहीं लगे या किसी स्टेट को अच्छा नहीं लगे, तो वो स्टेट आगे चल के सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है. बट फर्स्ट इट नीड्स टू बी टेकन टू द ट्रिब्यूनल. एनी डाउट्स? कॉर्पोरेट में भी ट्रिब्यूनल्स भी आते हैं ना. कॉर्पोरेट आल्सो इट गोस बेटा, कंपनी लॉज होते हैं ना, उसके हिसाब से जाएंगे. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. अब और कौन सी चीज है जहां पे आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो? मान लीजिए आपको किसी ने वोट करने से मना कर दिया. अभी के डेट पर तो शायद कर दी है, बिकॉज़ वी ऑल मस्ट बी नॉट अबव 18 years of age, right? But once you all turn 18 years of age and then you have got a right to vote, yes or no? So that's your fundamental right to choose your own political leader or political party. And if someone asks you कि नहीं हम तुमको वोट करने के लिए नहीं छोड़ेंगे, तो ये आपका फंडामेंटल राइट किसी ने छीन लिया आपसे, yes or no? In that situation you can directly go to Supreme Court. आपको किसी पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, किसी के भी पास जाने की जरूरत नहीं. You can directly approach Supreme Court, yes or no? And you can file a bill. Public interest litigation. Public interest litigation can be filed for infringement of your fundamental rights. सिर्फ और सिर्फ अगर आपके fundamental rights किसी ने आपसे छीन लिए, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे. ओके, पूछो. From where to turn on? Which button? Beta, please tell me. This is all. Yes. So which cases you can take to Supreme Court when your fundamental right is infringed? How many of you know what are our fundamental rights? We have 7 fundamental rights. 6. Second article. One was their right to property, that was it. Oh, right to speech, right to education, right to constitutional amendments, right to vote, right to education, right to equality, right to freedom of religion, and right to freedom of speech. Each has right and liberty, yes. Rest all you can check on who, okay, whichever is left of one. Coming back.
Class, do I have to keep screaming in between and remind you that you are sitting in a classroom? इतने बड़े तो आप हो गए हो ना बच्चा, या आपको डांट डांट कर हमेशा याद दिलाना पड़ेगा कि आप क्लासरूम में बैठे हो? Next part comes transfer of cases from lower courts. Sometimes it happens कि lower court मतलब कौन से lower court? Subordinate court. और supreme court से जितने भी court lower है उन सभी court की बात हम कर रहे हैं. All high courts, all subordinate courts, all district courts, all sessions court, everything we are talking about. अगर किसी भी lower court में ऐसा कोई case पहुंच जाता है जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा हो, very new, very rare, जिसके बारे में ना सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी सोचा हो, तो ऐसा केस अगर हाई कोर्ट को या सबऑर्डिनेट कोर्ट को या लोअर कोर्ट को ऐसा लगता है बेटा, इसको ना मैं नहीं सॉल्व कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, आई विल रेफर दिस कोर्ट टू दिस केस टू सुप्रीम कोर्ट. यस, so in that case there is a transfer of case from lower court to the higher court. Okay, so that happens under the article 139A. which article? 139A. इस आर्टिकल के तहत क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा केस का. And this 139A article is inserted into our constitution after the 44th amendment. What do you understand by amendment? Changes in the constitution. वो क्या क्या changes कर सकते हैं हम लोग? Add कर सकते हैं. You can't subtract, but Can subtract, yeah. We can add, we can modify. Yes, we can modify. We can add something. We can modify something. You subtract it. video है watch. बस ये और अच्छा बना. ये सारे articles से क्या होता है? Essence of the constitution is ये word याद रखना है. Essence of the constitution. Not class. So you cannot change anything like this. You cannot remove something which is already present in the constitution. Next one is which case? In which other case you can take a case to the Supreme Court when there is a question of interpretation of constitution? What do you understand by the word interpretation? What do you mean by that? Interpret करना किसी चीज को क्या होता है? To derive some meaning out of the constitution for a personal benefit. Not personal benefit, but Any derive a to meaning. build Derive a meaning. That was correct. Yeah, assume भी कुछ हद तक ठीक था. See, when you are given a shoes and you are asked to tie a shoelace, there are hundreds of different methods where you can tie a shoelace. Yes or no? तो एक लॉ जब आप बनाते हो, एक आर्टिकल जब आप देते हो, तो उसके तो hundreds इंटरप्रिटेशन बन जाएंगे, क्योंकि शूलेस तो बांधने वाला आदमी इलिटरेट हो सकता है, लेकिन जो लॉस को इंटरप्रेट करने बैठा है ना बेटा, वो तो बहुत कुछ पढ़कर बहुत सालों का एक्सपीरियंस लेके आके वहां बैठा है. यस और नो? सो इट इज अ वेरी क्लियर पिक्चर दैट हो सकता है एक कानून जो बनकर आया ना पार्लियामेंट से, उसको आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट अपने हिसाब से बता दे, गुजरात का हाईकोर्ट अपने हिसाब से बता दे, महाराष्ट्र का हाईकोर्ट अपने हिसाब से बता दे, एंड एवरीवन इज गिविंग अ डिफरेंट मीनिंग of a particular law that has been made in the parliament. This can happen. Yes, this can happen. हो सकता है. तो अगर सब लोग अलग अलग मीनिंग देने लग जाए तो क्या हो जाएगा बेटा? वो बदल ही जाएगा ना लॉ. कंप्लीटली लॉ का तो बनाने का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, हर कोई अपना मीनिंग दे रहा है. तो ऐसे में कोई एक चाहिए ना जो हमको फाइनल मीनिंग बता सके कि ये जो आपने लॉ बना के पार्लियामेंट में हमें दिया है वो क्या कहता है. Someone has to be there to tell us what it exactly means. Who is there? Supreme Court. That will tell us exactly what it means. Followed with original jurisdiction. Any doubt in this part? No. If you want, you can. Yeah, online students also. Any doubt to you, bachcho? You can tell me anything. No, you have ma'am. not understood. If you want, you can note this part. I'll wait for 1 minute. You can copy it. Class, are you going to write these points? We can. No, who said no? Underline this. You have underlined it? Okay. If that is fine with you, okay, we can go to the next part.
Online students, do you wish to copy this part or you will take a screenshot of it? Ma'am, we can write it. Yeah. Can also read the part from textbook and see how you understood everything so that you can ask me doubts related to that. Yes, class. Finished? Most of you have finished. Okay, let's take the next part. Online students, will you finish writing it down? Ma'am, almost done. Yes, ma'am, done. next part, academic jurisdiction. What do you understand about that? Yeah, which 2 points we have? No discussion can take place in the parliament regarding the conduct of any judge this part or about the discharge of his duties except when there is a motion of his removal. Yes, good point that you have pointed out, Beta. See, as I told, in a legislature, in a parliament, you are not supposed to discuss about the work and the duties of any of a judge. Yes, but sometimes there might be a situation wherein a judge has to be removed from his post. Yes, because of his misconduct, misbehavior, or if there is some misappropriation in the funds, then in such scenario, a judge is removed. In that case where a judge has to be removed, what is the word that we use? Impeachment. Impeachment. So when you decide to impeach a judge, how can you impeach them? There is a process. Two-third majority of the both houses will pass, and only then you are allowed to remove that, investigate the case, and then finally it is signed by the president, and only president has the authority to remove that judge. So when this discussion about whether to remove him or not to remove him has to be done, that is an exception, and you can discuss about the judge's duty in the legislature. Okay, rest all the times there is no permission to discuss about the judge duty. But if there is, a possibility that he has misbehaved or he has is incapable of performing his duties, and you have to pass a motion for his removal, then the discussion is allowed. Okay. Let's take the next part, appellate jurisdiction. What do you understand by the word appeal? Appeal. To appeal. Yeah, to request, yes, good point. So when you are requesting someone, why you are requesting? Okay, because something you tried before,
but it has not come up very well. So you are requesting help of someone to intervene and solve the matter for you, right? So that's how appellate jurisdiction also works. Appellate jurisdiction में बेटा आप सुप्रीम कोर्ट में कोई केस डायरेक्टली नहीं लेके जा सकते हो. पहले आप किसी लोअर कोर्ट में, जो कि अक्सर हाई कोर्ट रहेगा, हाई कोर्ट में आप केस को सॉल्व करने की कोशिश करोगे. वहां पे अगर जो जजमेंट आपको दिया है हाई कोर्ट में वो आपको लगे कि सही से नहीं दिया गया है, तभी आप उस केस को क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास एपेलेट जुरिस्डिक्शन के तहत जा सकते हो. तो कौन से केस ले जा सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट में एपेलेट जुरिस्डिक्शन के तहत? क्रिमिनल केस, सिविल केस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस. सो फर्स्ट लेट्स टेक द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस. कोई भी ऐसा उठा के ले जाएंगे क्या केस सुप्रीम कोर्ट के पास? सुनेगा आपकी बात को? नहीं सुनेगा. क्यों नहीं सुनेगा? कौन सा मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको डील करेगा या? See, why you know? Because sometimes same case, ऐसा ही एविडेंस के साथ, ऐसा ही सिचुएशन के साथ, यही सर्कमस्टेंसेस के साथ सुप्रीम कोर्ट में पहले से आ गया था. उन्होंने सॉल्व कर दिया है वो केस. अभी क्या किया है? अभी लोअर कोर्ट्स के पास अथॉरिटी है कि वो उन केसेस को जाने, समझे और उसके हिसाब से जजमेंट पास करे. बट अगर कोई केस ऐसा आता है जिसमें देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मीन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट को, लॉ को या क्लॉज को इंटरप्रीट करने में कोई गलती हो रही है या इंटरप्रीट किस तरह से करना है वो समझ में नहीं आ रहा है किसी भी हाई कोर्ट को, तो इन दैट केस द केस विल बी पास्ड ऑन टू द सुप्रीम कोर्ट. Followed? Any doubt in constitutional cases? No. That will certainly have the point which is to be discussed in the with related to constitution, which is a point of law and that needs a clarity on its interpretation. किस तरह से इसको इंटरप्रीट करना है, वो चीज अगर हाईकोर्ट को पता नहीं चल रही है या उसके इंटरप्रीट करने के बाद किसी एडवोकेट को ऐसा लगता है कि ये इंटरप्रिटेशन गलत है, तो भी क्या कर सकते हैं, उसे हम सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं. Now, when you need to take a case from High Court to Supreme Court, you need to get a certificate from the High Court. High Court आपको ये सर्टिफिकेट जो होता है ना यूजुअली दे देता है. उसने भी क्या करना है, क्यों बुरा बनना है उसको सर्टिफिकेट ना दे के आपके सामने. सो यूजुअली वो आपको ये सर्टिफिकेट दे देता है. बट समटाइम्स कोई केस ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल हलवा टाइप केसेस होते हैं, कुछ नहीं सब उसमें सब क्लियर है, एविडेंस है, कानून है, गुनहगार है और विक्टिम है, सब है, आपने बिल्कुल अच्छे से केस सॉल्व कर रखा है, पर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि जो केस में आपको जस्टिस मिला है ना वो सही से नहीं मिला है, तो आप जाने की जिद करो, मुझे जाना है सुप्रीम कोर्ट, जाना है सुप्रीम कोर्ट, जाना है सुप्रीम कोर्ट, तो आपको ऐसे सिचुएशन में सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. ओके, डिड यू गेट मी व्हाट आई वांट टू टेल यू? Now, next is, civil cases. Okay, before we go to civil case, मान लेते हैं कोई ऐसा केस सच में है जो बिल्कुल बहुत नया सा है and it has a lot of questions on constitutional interpretation और आपको ऐसा लग रहा है कि completely from starting to ending आपके साथ सब injustice ही हुआ है and the opponent has shown all the wrong evidences और बिल्कुल आपको फंसा दिया गया है, तो ऐसे में आपको अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफिकेट ना दे तो आप क्या करोगे? रोते बैठोगे घर पर? नहीं रोना. Will this come in protection around? We can issue a PI. You can issue ऊपर किसी का कंसर्न है वो भी क्वेश्चन हो गया आपके केस में किया जाए तभी भी फाइल किया जाता है. देयर इज अ लिमिटेशन, सर्टेन लिमिटेशंस होते हैं. मान लीजिए कोई वर्कर है, काम करते रहते हैं, बॉन्डेड लेबरर्स हैं, उनको ठीक से सैलरी नहीं मिलती है, तो वो कैसे जा सकते हैं कोर्ट में? उनको तो प्रोसीजर वगैरह कुछ नहीं पता होता है ना, मोस्टली दे आर इलिटरेट. तो इन सब सिनेरियो यू बीइंग एन आउटसाइडर, आप तो बॉन्डेड लेबरर नहीं हो, आप तो पैसे नहीं ले रहे हो, आपके साथ कहीं जस्टिस नहीं हो रहा है, पर फिर भी आप उन लोगों के लिए पीआईएल फाइल कर सकते. Even if you are not belonging, you are not a party to that case, still you can file a PIL. समझो PIL ऐसे नहीं है. It's for fundamental rights basically, and certain number of persons who are affected has to be involved. There's a limitation. But अगर कोई ऐसा limitation नहीं है, आपका अपना खुद का केस है जहाँ पे आपके साथ गलत हो रहा है और इससे सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया तो क्या करेंगे आप? आपको रोते नहीं बैठना है, आप लोग क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से सीधा स्पेशल लीव ले सकते हैं। स्पेशल लीव, व्हाट इज स्पेशल लीव नाउ? सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर आपको बताना है कि ऐसा हमारा केस है जहाँ पे हमको लग रहा है कि देयर इज एन इनजस्टिस डन टू मी, इट विल कॉल द केस बैक टू इट्स ओन कोर्ट। मैं सुप्रीम कोर्ट में बुला लेगा उस केस को। ओके, सुप्रीम कोर्ट में भी आपके साथ गलत हुआ ना, इनजस्टिस हुआ आपके साथ, आपको अच्छे से जस्टिस नहीं मिली, तो आप क्या करोगे? ऐसे में उस केस को आप सुप्रीम कोर्ट के पास ले जा सकते हो, और अगर आपको सर्टिफिकेट ना भी मिले तो फिर आप स्पेशल लीव करते हैं, आप ले सकते हैं। समझे क्या? Then the case has to be of some relevance। ऐसा नहीं कि भाई हमारा छोटा मोटा ही केस था, हम तो सेल्फ नहीं मिलेगा आपको। केस में कुछ ऐसी बड़ी बात होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि हाईकोर्ट में भी आप प्रूव कर सको कि हाईकोर्ट के जजेस ब्राइट थे या उन्होंने आपके साथ जानबूझकर इंजस्टिस किया है। ऐसा कुछ पॉइंट होना चाहिए, बड़ा पॉइंट होना चाहिए, तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते Can a person be jailed for taking matters of insufficient importance? नहीं, ये तो नहीं होता। It's like मैं हाई कोर्ट में जब बोला कि मतलब ये बेकार है, केस बेकार, but still वो जा रहे हैं। फिर वो जा रहे हैं तो वहाँ अंदर आपको घड़ी में डेट ही नहीं दिया जाएगा, आप अंदर ही नहीं, बाहर जो एडवोकेट्स होंगे, बाहर उनकी जो ऑफिस होगी, वहीं पे आपको बता देंगे कि आपका ये केस नहीं, तो अंदर जाके फिर बाद में, एंड सपोज अगर इतना उसको वेटेज है तभी उसको अंदर लेंगे ना, उस केस को फिर शेड्यूल किया जाएगा, अगर नहीं है इतना वेटेज तो इट विल नॉट बी, and your advocates are the best person to guide you in this matter, that which case has to be taken further. अगर आप advocate afford नहीं कर सकते, you are from a poor background person, then you will get the government advocate. They are known as public prosecutors. Public prosecutors, government के advocate. So they will be there. समझे बेटा? Any doubts on this part? Then, so next comes the civil cases. बच्चों civil case क्या होता है? Civil protest के time fighting for rights. हाँ, fighting for rights है, ठीक है। Protest like ये जो किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन, that's a civil case, okay? तो ज्यादा बड़ा सोच रहे हो, छोटा civil cases भी are those, अगर मान लेते दो भाई आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, मतलब violence, but they are fighting for rights or property rights usually, then that will come under civil case. If you know it's a divorce case, that's considered as a civil case. Okay, so such cases, class, who's talking there when I am talking? You know better than me, then come, teach. I will set my standard. If everyone talks in my class, I will make you stand and teach it. So next time, think over whether you're going to talk or not. Okay. So when you have a civil case in your hands, probably it may be a property case, or it may be a divorce case, or it may be a company law related some case. Two companies are having a dispute amongst themselves. Then that can also be taken to Supreme Court. First, it has to be taken to the High Court. वहाँ पे अगर जो जस्टिस मिला आपको अच्छा नहीं लगा, सही नहीं लगा, तो आप सर्टिफिकेट के लिए वेट करेंगे, आपको सर्टिफिकेट नहीं भी मिला, again you have this special leave provision. With the help of special leave, you can land up in the court of Supreme Court, apex court, which is the apex court of our country. But again, here I would like to specify that there should be some question of law, importance of law, interpretation of law. कोई भी मामूली चीज होता है अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने नहीं दिया जाए. Then next comes the criminal case. अब देखो ये थोड़ा एक्सेप्शन है बेटा, इसमें ध्यान देना. क्रिमिनल केस में ना बेटा आपको सर्टिफिकेट मिले या ना मिले, लेकिन अगर डेथ पेनल्टी मिली हुई है आपको लोअर कोर्ट से, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. अब देखो क्या होता है. There are two scenarios. The first scenario which I will be discussing here is, listen, I want complete silence. This is a very important part. This might come in your exam, so please अभी लोग यहाँ पे ध्यान दें. First thing that they have given you, where the High Court has reversed the judgment of the acquittal given by the lower court and punished the accused with the death sentence. मान लेते हैं दो नेबर्स आपस में लड़ झगड़ रहे थे, क्रिमिनल केस बना, एक ने दूसरे का कुछ
मर्डर कर दिया या बहुत कुछ हार्म कर दिया उसको, ही इंजर्ड हिम वेरी बैडली, मर्डर किया, इंजर्ड हिम वेरी बैडली। केस कहाँ पहुंचा बेटा? लोअर कोर्ट में पहुंचा। लोअर कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, आपस में तुमने झगड़ा वगैरह कर लिया, इसको जो भी इंजरी दी है ना तुमने, उसका तुम हॉस्पिटल बिल्स पे कर दो एंड मैटर को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और उसको थोड़ा सा कंपेंसेशन दे दिया, पैसे भरने के लिए बोल दिए, हॉस्पिटल बिल्स को भरने के लिए बोल दिया और छोड़ दिया। बट जो इंजर्ड पार्टी थी ना, उसे नहीं अच्छा लगा ये, तो विक्टिम ने क्या किया, वो केस लेके गए सुप्रीम हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट, पहले तो हाई कोर्ट आएगा, पहले हाई कोर्ट के पास ले गए। तो अभी हाई कोर्ट ने क्या किया, ये पूरा केस देखा सुना पड़ा, हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, तुमने तो इसको बहुत ही मारा है, तो हैंडीकैप बन गया है आदमी, हम तो तुमको डेथ सेंटेंस देंगे। तो पहले जो सत्य ने छूटा था लोअर कोर्ट से, अब क्या हो गया, डेथ सेंटेंस। Yes or no? So in the previous court, in the lower court, he had got a lesser punishment. Yes, he was acquitted, यानी कि उसको थोड़ा सा पनिशमेंट देके छोड़ दिया गया था। अब हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको डेथ सेंटेंस दे दिया। अब तो ये बड़ी बात हो गई ना, डेथ सेंटेंस, इट विल टेक अवे हिज लाइफ। So will he wait for the high court to issue him a certificate? He can directly go to the Supreme Court. जब लोअर कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया था या मुझे डेथ सेंटेंस नहीं दिया था या फिर मान लो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया था, तो ये कौन होते हैं मुझे आकर डेथ सेंटेंस देना। ओके, so this is the concept wherein you do not have to wait for a certificate, you can directly approach the Supreme Court. अब मैं जिस तरह हिंदी में बता रही हूँ वैसे ही, ताकि एग्जाम में मत लिख के आना, कोई मार्क्स नहीं देगा तुम लोगों को। You will have to write it in the language as they are specified in the textbook. Okay, it is that आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैं इस तरह से बताती रहती हूँ। Okay, so don't write it in the same language. Next, there is another case, a case which is withdrawn by the High Court from the subordinate court and sentenced to the accused. अब देखो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है बेटा, ध्यान दो। हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा था, नहीं हाई कोर्ट नहीं, सबऑर्डिनेट कोर्ट ले लेते। सबऑर्डिनेट कोर्ट में एक केस चल रहा था, ठीक है। लोअर कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा था, केस की हियरिंग चल रही थी, अच्छा खासा जस्टिस मिलने वाला था। बट इतने में क्या हो गया, हाई कोर्ट आ गया बीच में और बोला नहीं, ये लाओ ये केस हमको दो, इसकी डिसीजन तो हम ही करेंगे। मतलब बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गया केस। कौन आ गया, हाई कोर्ट आ गया। किसके केस में आ गया, कोई लोअर कोर्ट की एक केस में आ जाता है। अब क्या होता है, वो उस केस को हियरिंग में सीधा जो आदमी था, जो एक्विटेड था, जो अक्यूज था, उसे क्या कर देता है, डेथ सेंटेंस दे देता है। तो अब वो आदमी को क्या लगेगा, एक तो मेरा केस इसके पास था भी नहीं, ये खुद ही घुस के आया मेरे केस में और ऊपर से मुझे मौत की सजा सुना दी। Yes or no? This is the feeling that the person will get. तो वो इसके सर्टिफिकेट के रहेगा क्या, इम्पॉसिबल। वो तो दौड़ा दौड़ा सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा, समझे। But what was the need, like what could be the need of this high court to don't I get the justice was being served, but not by It might happen that the high court just goes on district court just go on and there is no judge available back in the district court, then that case will be given to high court to be solved. Or if there is a greater question of law or class, you all want to come and explain this chapter, I will gladly sit there and listen. Please maintain silence, have some decorum in the class, थोड़ा तो डिसिप्लिन मेंटेन करें आप लोग। इतने बड़े प्रॉब्लम से डांटना चाहिए। So whenever there is a question related to state legislature or any question related to law, then that scenario the high court will interfere. Nobody can stop it. But wants to interfere and take up a case from the lower court, what would they do? To a lower court. Followed? Any doubts in this part? No, ma'am. Okay, beta. No, ma'am. Good. Let's go to the next part, that is advisory jurisdiction. एक और jurisdiction है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। कौन सा jurisdiction है बेटा? Advisory jurisdiction. If anyone wants to write this part, please note it down to me.
अब आप एडवाइस किससे लेते हो बेटा? Good. पता चल गया मुझे आप सबसे एडवाइस लेते हो. Okay, so come back. So whom do you prefer, to take an advice who is someone, better in a position to give you an advice? आपसे छोटे हैं पर फिर भी अगर कोई सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट है तो आप छोटों से भी एडवाइस ले लेते हो. जरूरी तो नहीं कि वो उम्र में बड़ा ही होना चाहिए तभी आप उससे एडवाइस लोगे. If the person is having a better understanding of that subject matter, or if he has better experience, then you will prefer taking advice from such a person. Yes or no? So advisory jurisdiction होता है सुप्रीम कोर्ट के पास. And under advisory jurisdiction, अगर प्रेसिडेंट को कुछ समझ में नहीं आए, सपोज अगर एक नया बिल पास करना है, कहाँ से पास करती बेटा बिल? बिल पास होगी, फाइनली किसके पास आता है? प्रेसिडेंट के पास. किसके लिए आता है? वेरी गुड. और रोक के भी रख सकते हैं. देन कमिंग बैक, तो अगर बिल को पास कराने के लिए अगर प्रेसिडेंट के पास आता है और प्रेसिडेंट को कुछ डाउट है उस बिल के लिए, आई मीन ही इज नॉट वेरी श्योर कि इस बिल को पास करने से या इस लॉ को बना देने से कुछ सच में अच्छा भी होगा या इस पॉलिटिकल पार्टी जो फिलहाल रूलिंग पावर में है उसका अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है या पता नहीं, he is having some doubt regarding, he is not very sure. So in such scenario, the president can take advice from the Supreme Court. Supreme Court के जो senior most judges होंगे, जो CJI होंगे और सारे बाकी judges भी they will come up and they will give him a advice कि इसमें उन्हें क्या करना है या नहीं करना है. Yes. एडवाइजरी बोर्ड पे रिटायर्ड जजेस भी होते हैं क्या? Very rarely बेटा, है ना. जो काम कर रहे हैं उनसे पहले पूछ लो, खुशी खुशी बताने के लिए तैयार है. रिटायर्ड वालों को ले आ रहे, उन्होंने तो कर दिया बहुत देर में. आप जो प्रेसिडेंट हो ना, आपने एक सीजीआई को इलेक्ट कर रखा है, बट यू स्टिल फील कि आपने मान लीजिए आपने फॉर्मली आप अगर इस तरह रूल्स एंड प्रोसीजर के हिसाब से एडवाइस नहीं लेते, लेट्स टेक कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रकार एडवाइस नहीं लेते हो, तो ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए कि कल को वो जो रूल है या बना है, एक्ट बना है, कानून बनी है, उससे देश को नुकसान हो गया, तो लोग तो आप पर सवाल उठाएंगे एज अ प्रेसिडेंट कि आपने क्यों जुडिशरी से एडवाइस नहीं लिया. आपने तो लिया था, आपके पास क्या प्रूफ है? यस और नो? आपके पास भी तो प्रूफ होना चाहिए ना बताने के लिए कि भाई हमने तो लिया था, इन्होंने झूठा गलत एडवाइस दे रखा, हमने तभी तो हमने साइन किया, लॉ बनाया, अब देखो लॉस हो रहा है. यस और नो? आई विल चेक. यस मैम. सो एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन, आप किसी से एडवाइस लेते हो तो क्या जरूरी है आप उनकी बात सुन ही लेते हो? ये तो बक्का नहीं सुनता, इतना जल्दी से स्पॉन्टेनियसली से नहीं. सुनो सबकी करो मर्जी, नहीं करते हो सब. यस, तो यही होता है. अभी ये सारी बातें आपको एग्जाम में भी लिखना है. एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन मीन प्रेसिडेंट विल हैव सुनो सबकी करो मर्जी अथॉरिटी. यू विल नॉट गेट मार्क्स इफ यू राइट इन दिस वर्ड्स. ओके. Yes. So you want to attend my lecture with that? Civics feels boring. Ask them, did they feel bored today in this class? Yeah. So let's come back. See, listen. So whenever you take an advice, that advice doesn't have a right or a position of a judgment. तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको जो एडवाइस दी है, आप एज अ प्रेसिडेंट डिसाइड करोगे कि आपको उस एडवाइस को मानना है या नहीं मानना. आपको नहीं अच्छा लगा, आप नहीं मानोगे. आपको अच्छा लगा, आप मानोगे. ओके. सो इट्स अप टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट, इट्स अप टू हिज ओन विल कि उसे अपने सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस सुनना है या नहीं सुनना. देयर इज नो फोर्स ओवर. एनी डाउट? ओके, लेट्स टेक द अदर पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. Hope you enjoyed the topic. Yes, bye students. Bye, ma'am. Bye.